अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज की जो हमारी वीडियो है वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म के टॉपिक एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी के बारे में है। ठीक है जी। उसके पहले इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, वो लॉन्ग जाइनिस के बारे में बनाई थी, और उसकी जो 5 डिफरेंट सोर्सेज हैं ऑफ सबलाइम, उसके बारे में बनाई थी। ठीक है जी। तो आज की जो वीडियो है वो ट्रेजेडी के बारे में है, इन स्पेसिफिक रेफरेंस टू एरिस्टोटल। एरिस्टोटल वाज वन ऑफ द फेमस ग्रीक राइटर, फिलोसफर, यू कैन से। ठीक है जी। एंड ही लिव्ड फ्रॉम 384 BC to 322 BC, and his amazing masterpiece written work is known as Poetics. तो आप ये अपने साथ एज MCQ भी नोट डाउन कर सकते हैं कि his Aristotle's famous work is called as Poetics, and he lived from 384 BC to 322 BC. वैसे बाय द वे, आप लोगों को ये जो BC है, बिफोर क्राइस्ट वाली जो है, जो सबसे पहले 384 आता है और बाद में 322 आता है, इसकी समझ आती है कि नहीं आती? अगर नहीं आती तो मैं छोटी सी इसके बारे में वीडियो बना सकती हूँ। आई लेट यू नो हाउ इट वर्क्स। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट वाज एरिस्टोटल डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी। सो एरिस्टोटल डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी इज, प्लीज़ आप ज़रा वाइट बोर्ड पे फोकस करें। ठीक है जी। सो इट इज़ द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, serious, complete, and of certain magnitude in a certain language, beautified in different parts with different kinds of embellishment through actions and not narration, and through sentences of through scenes of pity and fear. ठीक है जी। थ्रू what? थ्रू pity and fear, ब्रिंगिंग अबाउट कथारसिस ऑफ दीज इमोशन। अब मैंने ये जो डेफिनेशन है, मैंने 2-3 हिस्सों में डिवाइड की है। आई एक्सप्लेन इट टू यू। द फर्स्ट वन इज इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरीज, कंप्लीट एंड ऑफ सर्टन मैग्नीट्यूड। देख ले, इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, सीरीज, कंप्लीट एंड ऑफ सर्टेन मैग्नीट्यूड, ये फर्स्ट पॉइंट है। सो इट मीन्स दैट अ गुड ट्रेजेडी डील्स विद वन इशू दैट इज़ वेरी सीरियस। यू डोंट हैव अ ट्रेजेडी समथिंग ट्रिवियल, मतलब आप एक ट्रिवियल चीज़ पे, जैसे कि आप किसी की नाक तोड़ देते हो, उसके बारे में तो बात नहीं करेंगे। अब सेम सेंटेंस में मैग्नीट्यूड के बारे में बात होती है। सो व्हाट इज मैग्नीट्यूड? Magnitude here means size. The tragic plot must have a certain magnitude or length. It should be long enough to allow the change from happiness to misery. मतलब इतना वक्त उसमें होना चाहिए कि from happiness to misery हो जाए, but not too long to be forgotten before the end. लेकिन इतना लंबा भी नहीं होना चाहिए कि आखिर तक उसकी real essence है वो ही ख़त्म हो जाए. Action should not be too short, not be regarded as, because it is not regarded as a proper and beautiful for different parts, and it will be also not clearly visible. In different parts, the different parts must be well related to each other एंड टू द होल। एक दूसरे से भी वो प्लॉट्स के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं, डिफरेंट पार्ट्स उसमें लिखा हुआ भी है, अगर वो डिफरेंट पार्ट्स जो हों वो एक दूसरे से भी मुताबिकत रखते हों, और किस चीज़ से मुताबिकत रखते हों? होल से, जो रियल उसका एसेंस है उससे भी। इट मस्ट बी एन ऑर्गेनिक होल। इसकी भी इस पर खैर बाद में आएंगे, लेकिन आप ज़रा इस डेफिनेशन को पहले समझ लें। उसके बाद जो सेंटेंस में जो हमने जो मार्किंग लगाई है वो है अ लैंग्वेज, इन अ लैंग्वेज ब्यूटिफाइड इन डिफरेंट पार्ट्स विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ एम्बेलिशमेंट। एम्बेलिशमेंट मतलब आप डेकोरेशन को कह सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है जी। सो इन अ लैंग्वेज ब्यूटिफाइड इन डिफरेंट पार्ट्स विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ एम्बेलिशमेंट। बाय लैंग्वेज एम्बेलिश्ड here it means that language is turned into, yeah, you can say the language is harmonized, it has a rhythm and a song enters over here by different kinds in separate parts. It means that some parts are rendered through the medium or verse and alone. ठीक है जी। मीडियम ऑफ वर्स एंड अलोन उसमें रेंडर किए गए हैं। अच्छा, अब दूसरा देख ले, एंड देयर आर थ्रू सीन्स ऑफ through actions and not narrations. To narrate a story is to simply tell a story, like telling a friend what happened to you yesterday. In a play, the story must be dramatized or acted out. मतलब ड्रामाटाइज हुआ हो या फिर एक्ट हुआ हो। फिर जो है हमारे पास थ्रू सीन्स, क्या है? थ्रू सीन्स ऑफ pity and fear. In a tragedy, the events or episodes in a play should lead the audience to feel very sorry for the main character, the tragic hero. The audience should also feel afraid for the hero as he moves towards the destructive end. तो क्या होता है ट्रेजेडी में, लोगों जब वो लोग देख रहे होते हैं तो वो मेन हीरो या प्रोटैगनिस्ट के लिए पिटी फील करे कि उसके साथ बुरा हुआ है, और फियर भी करे, ऐसा ना हो कि उसके साथ और कुछ बुरा हो जाए। पिटी फॉर द हीरो, और अपने लिए भी फियर, कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए कि पिटी फॉर द हीरो एंड फियर फॉर वन ओन सेल्फ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्रिंगिंग अबाउट कथारसिस ऑफ दिस इमोशन। ठीक है, लास्ट में देख ले, ब्रिंगिंग अबाउट कथारसिस ऑफ दिस इमोशन। इट मीन्स दैट एज द प्ले मूव्स ऑन, द इवेंट शुड बिल्ड अप द इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर। क्या जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ता जा रहा है एंड आता जा रहा है शो, इट शुड बिल्ड अप द इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर। ठीक है, or as the catharsis are coming out, there are cleansing of emotions, a release of tension. In tragedy, this is often a moment of revelation when the tragic hero falls flat on his face. And finally, the audience, what happens to the audience? It explodes with either sadness,
like it is a tragedy, so it will arouse the emotion of sadness. Audience will cry because they will feel very bad for the main character, or you can say protagonist. That's what it is. ठीक है जी. अच्छा, अब आते हैं दूसरे हिस्से पे. वो क्या है? दूसरा जो हिस्सा है वो एरिस्टोटल की कंपैरिजन है किस चीज़ से? कॉमेडी एंड एपिक से. ठीक है जी. सो एरिस्टोटल कंपेयर ट्रेजेडी टू comedy and epic, and he says that like he determines it in like an emotion. ठीक है जी. Like an imitation, sorry, and not emotion but action. He determined it is like an action, also adds that it has a serious purpose. ठीक है जी. and uses direct action. ये जो imitation है, ठीक है जी, जिस तरह हमने पहले भी बात की कि Aristotle considered it tragedy as to comedy and epic, so he determined it like imitation and also adds that it has a serious purpose and uses direct action. For what purpose? For the tragedy. Aristotle says that aim of tragedy is to bring about catharsis. ये third point. ठीक है जी. So the main aim according to Aristotle of tragedy is to bring catharsis. What are catharsis? It is to bring or arouse sensations, emotions, pity and fear as well. ठीक है जी. अच्छा, according to Aristotle, there are 6 main elements of a tragedy. What does Aristotle says? Aristotle says that there are 6 main elements of a tragedy. Number 1 is plot. So according to Aristotle, plot is soul of a tragedy, and this plot can be either simple or complex. ठीक है जी. And there in a plot there should be a proper beginning, there should be a proper middle as well as end. And I have already made a video on this plot type thing. I'll link it above. You can check it. ठीक है जी. अच्छा जी. फिर क्या कहता है कि there should be a cause and effect relationship ऑफ दिस इन द प्लॉट. ठीक है जी. अब प्लॉट एंड कॉज एंड इफेक्ट का क्या एग्जांपल मैं आपको दूं? जिस तरह हमें अपने टीचर ने जो एग्जांपल दी थी वो आपने, आई नो यू पीपल वुड हैव स्टडीड इट इन योर कोर्स एज वेल, बट लेट मी क्लियर इट आउट. सो प्लॉट क्या होता है? जो स्टोरी होती है वो किस तरह होती है कि द किंग डाइड एंड द क्वीन डाइड. ठीक है जी. लेकिन प्लॉट में किस तरह होता है? हाउ विल यू एक्सप्लेन द प्लॉट? यू विल से दैट द किंग डाइड एंड द क्वीन डाइड ऑफ ग्रीफ. So what is it? It's a plot. There is a proper beginning, there is a proper middle, and then there is a proper end, and it has a cause and effect relation. What is the cause and effect relation? Just now I gave you the example कि story में क्या होता है कि the king died and the queen died, while in plot there is nothing as such, but there is cause and effect relation. So you will say that the king died and the queen died of grief. The second point is character. So the character should be appropriate. The end they should be consistent. Appropriate in the sense that if a person is doing old poor man character, so he should be appropriate for that. He should be consistent in what he's saying, in what he's doing. Like बाचा हो तो वो बाचा की तरह बात करे, उसकी तरह बिहेव करे, ना कि एक पुअर पर्सन की तरह. ठीक है जी. अच्छा जी. और बिलीवेबल हो, मतलब एक आम सा इंसान है, उसके पास जो सुपर नेचुरल पावरें आती हैं तो वो भी अनबिलीवेबल हो जाता है. अच्छा जी. फिर जो थर्ड पॉइंट जो है हमारे पास वो क्या है? डिक्शन. इट्स द चॉइस ऑफ वर्ड्स. डिक्शन इन सिंपल वर्ड्स मीन इट्स द चॉइस ऑफ वर्ड्स, एंड लाइक इट्स द एक्सप्रेशन ऑफ मीनिंग इन डिफरेंट वर्ड्स. इट्स द एक्सप्रेशन ऑफ मीनिंग इन डिफरेंट वर्ड्स. ठीक है जी. सो थॉट एंड डिक्शन जो है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, थॉट एंड डिक्शन आर रिलेटेड इन अ सेंस दैट इट इज़ थ्रू डिक्शन दैट थॉट इज एक्सप्रेस्ड. इसके नीचे ही हमारे पास थॉट है, तो इसलिए मैंने आपको इससे लिंक करके बताया. सो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, व्हाट थॉट एंड डिक्शन are related in what sense? They are related in this sense that it is through diction, it is through the choice of words that thought is expressed. ठीक है जी. फिर हमारे पास क्या है? थॉट है, जो कि what is thought? It's like the inner feelings of the characters in that play, and thought is basically the theme of that very play. Then we have spectacle. यहाँ पे नंबर 5 spectacle. Spectacle is like appearance on stage of different characters, and this is according to Aristotle, this is the least important एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी. ठीक है जी. अच्छा, फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट इज़ कोरस. कोरस आपने एडिपस रेक्स में बहुत ज़्यादा नोट किया होगा. सो व्हाट इज़ बेसिकली कोरस? कोरस इज़ लाइक म्यूज़िक जो कि गाती है या आपको किसी एक चीज़ के बारे में बताती है कि अब क्या होने वाला है, अब आगे क्या होगा. तो जो म्यूज़िक होता है ट्रेजेडी में, एक प्ले में, उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कोरस कहते हैं. आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई हो. फिर भी कोई क्वेश्चन हो, प्लीज़ 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 डू राइट इट डाउन बिलो. आई विल आंसर इट टू यू and I'll see you in the next video. I hope you do understand it. If I revise it to you guys, so what is Aristotle theory of tragedy? It is the kind of an action which is imitation of an action which is serious and complete and of certain magnitude, of a certain size, in which a language is beautified in different parts as well as this different kinds. ठीक है जी. And through actions and not
नरेशन। ठीक है जी, ये जो ब्यूटिफाई हुआ होता है ये एक्शंस के थ्रू ब्यूटिफाई हुआ होता है और नरेशन के थ्रू नहीं। एंड देन देयर आर सीन्स ऑफ पिटी एंड फियर ब्रिंगिंग अबाउट catharsis, which means arouse of emotions like pity and fear. Then we see that Aristotle compares tragedy to comedy and epic, and he says that it has a serious purpose and it has a direct action as well, and tragedy should also arouse pity and fear among the people. And there are 6 basic elements of tragedy, which are the plot, character, diction, thought, plot, character, diction, thought, spectacle, and chorus. And a plot should be whole, it should be simple or complex, and there should be a proper beginning, middle, and end. And there should be definitely a cause and effect relation in a plot. Then there are characters which should be appropriate and consistent. And then we have diction, which means that there should be a proper choice of words for each character. Then we have thought, which is like the inner feelings of a character, and it's like a theme of the play. Then we have spectacles, which means the appearance on the stage, which according to Aristotle is the least important element of tragedy. Then we have chorus, which is the music. ठीक है जी, I hope you understand it. Let me know if you have still any questions. We'll see you in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.